Hello children, welcome to this maths class of yours. I am Poonam Bagga and we are studying chapter 9 Algebraic Expressions and Identities from class 8 maths. In our previous video, we completed the first 4 questions from exercise 9.5 based on algebraic identities, which are some special products. Today we will be completing this exercise and take up its remaining questions, and with it we will be completing this chapter. Before we start, let us once again recall the algebraic identities, which are 4 in number. The first identity is the product of expressions of the form a plus b into a plus b. Here both the binomials are of the same form, and so this can be written as a plus b whole square. The terms are same, and so the same expression is getting multiplied by itself 2 times. So we can write it as a plus b whole square. And now how to expand this? We will get it as a square plus 2ab plus b square. आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं a square plus b square plus 2ab, because the order in which the terms are written, it does not matter in case of addition. Then we have the second identity, which says we are multiplying the binomial a minus b by a minus b. Here again the terms are same and the sign is minus in these two expressions, and since the same expression is getting multiplied by itself 2 times, it can be written as a minus b whole square, and on expanding we get a square minus 2ab plus b square this time. And then we have the third identity. Here we have the binomials a plus b into a minus b. यहाँ आप देख रहे थे दोनों ही बाइनोमियल्स सेम थे, टर्म्स बिल्कुल सेम थी. यहाँ पर भी दोनों बाइनोमियल्स बिल्कुल सेम है, इनकी टर्म्स बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकली तो टर्म्स सेम है पर साइन ऑपोजिट है. यहाँ प्लस है बीच में और यहाँ है माइनस. a प्लस बी a माइनस बी, एंड नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. We also use this identity in reverse way. We can be given this expression a square minus b square, जहाँ पर आप देख रहे हैं होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, हर टर्म का इंडिविजुअली स्क्वायर अलग अलग हो रहा है. और ऐसे केस में हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे a plus b into a minus b. So both ways this identity will be used here. And then we have the fourth identity where we have the expressions x plus a into x plus b. यहाँ आप देखेंगे दोनों बाइनोमियल्स में जो फर्स्ट टर्म है वो तो सेम है, बट द अदर टर्म्स आर नॉट सेम, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू गिव अ एक्सप्रेशन विच विल बी हैविंग 3 टर्म्स. देखिए 3 टर्म्स होंगी हमारे पास इस एक्सप्रेशन में, जो हम इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा. और फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो आप लेंगे स्क्वायर ऑफ दिस टर्म विच इज़ द सेम इन बोथ द केसेस. फिर आप सेकेंड टर्म में इसी को लेंगे विथ पावर 1, और थर्ड टर्म में ये वेरिएबल x नहीं आएगा. देन वी विल बी राइटिंग द सम ऑफ दीज 2 टर्म्स along with this x, a plus b here, and then here we will be having their product a into b. So these are the 4 identities. Now we proceed towards question 5 from exercise 9.5. Show that this expression is equal to this expression. Now whenever we have a question of the form show that or prove that or verify, in such cases we will be simplifying the LHS and RHS separately. जब भी हमें शो करना है कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है तो हम LHS को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, RHS को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों का सिंप्लीफाइड फॉर्म सेम आ रहा है या नहीं. Here we begin with the LHS. LHS part is still this equality sign. ये पूरा LHS part है. This can be written as 3x plus 7 whole square minus 84x. Now look at this expression, 3x plus 7 whole square. Which identity should be applied here? You will see here we have whole square और बीच में है plus. Just recall here, we have a plus in the center and then whole square. So this is the case of the first algebraic identity, and so on applying this we will get the first term square plus the second term square, and in between plus multiply both these terms by 2. ठीक है, and now you can write here minus 84x from the question. Now simplify 3x whole square, 3 square is 9, and then x square plus here 3 2s are 6 into 7 it's 42x plus 7 square is 49 minus 84x. Here you can mention the identity that you are using, a plus b whole square, it is equal to a square plus 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी जो आपने अप्लाई की है उसको यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं.
Now again just look at these like terms. This is plus 42x and this is minus 84x. ये like terms हैं क्योंकि यहाँ पर variable same है, power same है. So we can add these two terms. We will get 9x square plus 42x minus 84x plus 49. Now 42 minus 84, what will it be? It will be minus 42x plus 49. देखिए आप यहाँ पर जो coefficients हैं उन्हीं को हम ऐड करते हैं और वेरिएबल तो सेम रहेगा. So we will have minus 42x and then here we have 9x square and here we have 49. So this is the full expression. This is the simplified form of the LHS. Now we will simplify this RHS. Let us write the RHS part here. This is 3x minus 7 whole square. Now which identity should be applied here? Yes, the second one. We have a minus in the center and then whole square. तो यहाँ अप्लाई होगी सेकेंड आइडेंटिटी विच विल बी फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस द सेकेंड टर्म स्क्वेयर एंड देन माइनस मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम बाय 2. In this way we will be applying the second identity. You can mention it here since a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square using this identity. Now simplify. This will become 9x square. Here you will have minus 2 3s are 6, 7s are 42x plus here you will have 49 and this is the same expression as this one, the LHS part. And so what we see here, LHS and RHS both have come out to be equal. We write here LHS is equal to RHS. Hence the result is proved or verified. जो हमें शो करना था वो हमने शो कर दिया है. ये एक्सप्रेशन इक्वल है. इस एक्सप्रेशन के जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही एक्सप्रेशंस इक्वल हैं एंड सो LHS इज RHS एंड सो हेंस प्रूव्ड. गेटिंग इट? नेक्स्ट वी हैव दिस वन. अगेन वी विल टेक द LHS सेपरेटली. 9p minus 5q whole square plus 180pq. सिंप्लीफाई. यहाँ आप देखेंगे सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. वी हैव अ माइनस इन द सेंटर एंड देन होल स्क्वेयर. सो द सेकेंड आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड हियर. फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वेयर and multiply both of them by 2 with a minus sign here. Okay, and then we have plus 180 pq from the question itself. Right here, since a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना नहीं भूलना है. Now 9 square is 81, p square will be p square minus 2 5s are 10 into 9 it will be 90 pq plus here 5 square is 25 q square plus here 180 pq. Now look at these like terms, this one and this one. We can take them together. 81 p square minus 90 pq plus 180 pq plus 25 q square. Now 81 p square, this will be minus 90 plus 180. It will be plus 90 and then pq will be written as it is plus 25 q square. Now we cannot simplify it further. This is the simplified form of the LHS. Now we move towards the RHS. We write it here, the RHS part. It is 9p plus 5q whole square. और इस बार बताइए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहाँ पर? Yes, the first identity. We can write it as the first term square plus multiply both of them by 2 plus here 5q whole square. Since a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, the first identity. This will be equal to 81p square plus here you will have 90pq and plus 25q square. What do you see? Both these expressions are same and so we can say that LHS is equal to RHS. दोनों expressions equal आ गए. Hence we have proved the result. Whatever we had to prove
इक्वल वी हैव प्रूव्ड। देखिए आप, ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल प्रूव करने थे, हमने LHS को सिंप्लीफाई किया, ये एक्सप्रेशन मिला, RHS को सिंप्लीफाई किया, ये किया, और हमें दोनों एक्सप्रेशन सेम मिल रहे हैं, इक्वल हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड और प्रूव्ड। Next one is this one. Here again we have to show that this expression in the LHS is equal to this RHS. So we begin with the LHS, 4 by 3m minus 3 by 4n whole square plus 2mn. Here you can see we have a minus sign in between and we are getting its whole square. तो यहाँ कौन सी identity apply होगी? The second one. Yes, we can mention here, since a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square, we can now easily simplify this as first term square minus multiply both these terms by 2, 4 by 3m into 3 by 4n, and plus here we will have 3 by 4n whole square and plus 2mn. It's from the question, this one, this term. ठीक है, here we have written which identity we are applying. Now simplify. 4 square is 16 upon here 9m square minus here you can see we have a multiply sign in between. We can easily cancel the terms or the numbers in the numerator and the denominator. ये 4 से 4 cancel हो रहा है, 3 से 3 cancel हो रहा है, और क्या बच गया? minus 2mn, और यहाँ से 3 square is 9, 4 square is 16 and n square plus 2mn. Now look at these two terms. These are like terms, mn और mn same variable part है, और इसलिए यहाँ पर हम इन्हें add करेंगे. Now plus 2mn minus 2mn, 2 minus 2 it will be 0. These two terms will be cancelled. जब same ही terms हो और sign opposite हो, हम easily उनको cancel कर सकते हैं. So cancel these two terms and we are left up with 16 upon 9m square plus 9 upon 16 n square, and this is nothing but our RHS. What we see? This is equal to RHS. This implies that LHS is now equal to RHS and hence the result is proved. Whatever we had to prove to be equal, we have proved. Getting it? कितना simple है, easy. Just by applying this identity, we have made it look so simple. Next one is this one. Here again we have to prove this expression equal to this one. We begin with the LHS part. 4pq plus 3q whole square minus 4pq minus 3q whole square. Now here you will see this is whole square with plus sign in between, and this is again a whole square with minus sign in between. So here we will be applying the first identity and in this case the second identity. Let us apply them. Here you will see first term square plus multiply both of them by 2, 2 into 4pq into 3q, then plus the second term square. ठीक है, ये पार्ट क्लियर है. कैसे एक्सपेंड किया? फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर, और फिर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा. यहाँ पर अब माइनस है. नाउ बी वेयर ऑफ दिस माइनस साइन. ये खतरे का निशान है. माइनस साइन आए तो उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे उसे ब्रैकेट में एनक्लोज करना बहुत ज़रूरी है. नहीं किया तो हमारे साइन गलत हो जाएंगे. वी विल बी गेटिंग अ रॉन्ग आंसर. तो अब क्योंकि यहाँ माइनस है, वी विल बी फर्स्ट अप्लाइंग द ब्रैकेट एंड नाउ वी विल बी ओपनिंग अप दिस स्क्वायर पार्ट. कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म स्क्वायर, देन let me make some space. Here we have a minus, so minus multiply both of them by 2, 2 into 4pq into 3q plus here 3q whole square and then a bracket. देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर बार बार आपको कह रही हूँ ये माइनस जो है खतरे का निशान है, इसलिए इसको मैंने रेड से भी कलर कर दिया है. जब भी माइनस होगा हमारे पास, उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट में एनक्लोज करना ज़रूरी है. हाँ, अगर बीच में प्लस होता तब आप यहाँ ब्रैकेट लगाएं या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस है तो आपको ब्रैकेट ज़रूर लगाना है. और जब हम खोलेंगे इस ब्रैकेट को तो एक एक करके सभी टर्म्स के साइन चेंज होंगे, अभी हम देखेंगे. Here we can write the identities which we have used. Since a plus b whole square, it is equal to a square plus 2ab plus b square.
and a minus b whole square, it is equal to a square minus 2ab plus b square. These two identities we have used, we can mention them here. Now simplify this expression, this one. 4 square, it's 16 p square q square. ठीक है, p का square हो गया p square and then we have q square plus here 2 4s are 8, 8 3s are 24 p and then you will be adding the powers of this variable q. q यहाँ पर 2 बार है, q into q, it will be q square plus here 9q square, then minus again a bracket, this will be 16 p square q square minus here 2 4s are 8, 8 3s are 24 p q square plus here 9q square. Again now we will open now this bracket, 16 p square q square plus 24 p q square plus 9q square minus here 16 p square q square minus minus will now become plus. देखिए आप, ये माइनस और ये माइनस अब हो गया प्लस. अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो हम इसे माइनस ही लिख लेते और यहाँ से हमारा गलत आंसर स्टार्ट हो जाता. इसलिए ये माइनस और माइनस प्लस हो गया ब्रैकेट लगाकर. अब जब हम खोल रहे हैं तो हमारे साइन अपने आप ही सही बैठ रहे हैं. दिस विल बी 24 p q square. Again this minus and this plus on multiplying we will get minus, minus into plus is minus and here 9q square. Now we have no brackets, now we will look out for like terms. देखिए आप 16 p square q square, this one and again 16 p square q square, ये है like terms, but here this is plus 16, this is minus 16. So we can easily cancel these two like terms, cancel this term by this term. Then we have here 9q square minus 9q square, again cancel these two terms. Then we have been left up with 24 p q square and here 24 p q square. दोनों ही यहाँ पर प्लस हैं तो इसलिए ये दोनों एड अप हो जाएंगे. We will get 24 p q square plus 24 p q square equal to 48 p q square. यहाँ पर साइन ऑपोजिट नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होंगी, एड अप हो रही हैं टर्म्स. एंड नाउ दिस इज इक्वल टू द RHS given in the question and so we can write it equal to RHS. This was supposed to be equal and so we write here LHS is equal to RHS. This result implies and hence the result is proved. Getting it? This expression is equal to this expression. देखिए आप, इस पूरे expression को हमने simplify किया तो ये equal आ गया 48 pq square की. Next we have this one. Again let us begin with the LHS. LHS part is a minus b into a plus b, plus here we have b minus c into b plus c, plus here we have c minus a into c plus a. Now just have a look at these two binomials. आप देखेंगे न्यूमेरिकली तो टर्म सेम है पर साइन ऑपोजिट है. एक बार हमारे पास माइनस, एक बार प्लस. तो बताइए कौन सी आइडेंटिटी हुई? Yes, the third one which says a minus b into a plus b is given as a square minus b square. तो अब यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. यहाँ पर तो हम सीधे लिख सकते हैं a square minus b square. अब यहाँ पर टर्म्स हैं b और c, b minus c, b plus c. तो कैसे लिखेंगे आप? Yes, b square minus c square. और आप देखेंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में यहाँ पर है प्लस, तो अब हम प्लस लिख सकते हैं. और क्योंकि प्लस है तो प्लस के बाद वाले एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में एनक्लोज करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम नहीं लगाएंगे ब्रैकेट. हाँ, अगर माइनस होता यहाँ पर तब हमें क्या लगाना होता? ब्रैकेट लगाना होता माइनस के बाद आने वाले एक्सप्रेशन पर. अब क्योंकि प्लस है तो हम यहाँ ब्रैकेट नहीं अप्लाई करेंगे. नाउ हियर अगेन वी हैव प्लस, सो राइट इट हियर प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए. यही आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए. इस बार टर्म्स हैं c और a, it will be c square minus a square. Getting it? Now look out for like terms. Here we have a square, here we have minus a square. These are getting cancelled. Yes, cancel them. Minus b square plus b square. एक बार minus में है, एक बार plus में है, cancel होके 0. Cancel these two terms. Again minus c square plus c square. Getting cancelled. Now no term is left and so the answer is 0. And this is nothing but the RHS and so we can write it equal to RHS.
This implies LHS is equal to RHS and hence the result is proved very quickly, isn't it? Next we have question 6. Using identities evaluate 71 square. Now you can find the 71 square by multiplying 71 by 71. But to get the answer quickly, we will be applying the algebraic identity, and for this we will be splitting this number into two parts. 71 को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में इस तरह से कि एक नंबर जो लेंगे हम वो जीरो पे एंड हो रहा हो, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ईजी टू डील विद नंबर्स दैट एंड विद जीरो. तो हम यहाँ 71 को लिख सकते हैं 70 + 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. 71 को ब्रेक किया 70 + 1 और क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए होल स्क्वायर अप्लाई किया. Now this is resembling the first identity a plus b whole square. ये आइडेंटिटी अब हम यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं. a square plus 2ab plus b square. For this we can write it here, first number square plus the second number square plus multiply both of them by 2. ठीक है. Now 70 square, 7 square is 49 and for 0 we will double the number of zeros. 1 single 0 है, अब डबल हो गए 2 zeros plus here 2 sevens are 14 and 0 140 here plus 1. Now simply add these three numbers. You will have 41 here 0 and 5. 5041 is the square of 71. देखिए आप बिना मल्टीप्लाई किए जल्दी से हमने आंसर ले लिया just by using this algebraic identity. Clear? Next we have 99 स्क्वायर. अब 99 स्क्वायर हम फिर से 99 को 99 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, बट दिस विल बी डिफिकल्ट. टू गेट द आंसर क्विकली वी विल बी यूजिंग एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी. तो उसके लिए 99 को ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ नंबर विच एंड्स एट 0. और आप बताइए कैसे ब्रेकअप करें. यू कैन ब्रेक इट एज 90 + 9 और 100 - 1 and it's always easy to deal with 100, so we will take this splitting part. Okay, 99 को हम लिखेंगे 100 - 1 और क्योंकि स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर. Now this is resembling the second identity which says a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. Using this identity we can easily now get the answer. First number square plus second number square minus multiply both of them by 2. 100 square, it will be now 4 zeros here, so 10,000 minus here 2 into 100 will be 200 plus 1. Now 10,000 minus 200, it is 9,800 और अब 1 इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पर, it will be 9801. आप यहाँ से एक और तरह से अप्रोच कर सकते हैं. यहाँ पर जो टर्म्स है प्लस वाली टर्म्स उनको एक साथ ले लीजिए, पहले नेगेटिव टर्म को सेपरेट कर लीजिए. 10,000 + 1 - 200. ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लिख लिया, नेगेटिव टर्म को सेपरेट कर दिया. दिस विल बी 10,001 - 200 and now this will be 9,801. So you can approach in any of these two ways. कोई सा भी मेथड अप्लाई कीजिए, you will get the right answer. Next we have 102 square. For this again we will be splitting this 102 and we will be writing 100 + 2. 102 को हमने स्प्लिट कर दिया 100 + 2 क्योंकि अब 100 से डील करना हमेशा आसान रहता है, इसलिए ऐसा किया हमने. और स्क्वायर के लिए हम लगाएंगे होल स्क्वायर. अगेन फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकेंड नंबर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम बाय 2. Simple. We are using the first identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Next here 100 square will be 10,000 with 4 zeros. 2 2s are 4 into 100 400 and here we have 2 square which is 4. Now simply add these three numbers. This will be 10,404. So 10,404. So quickly we have got this answer just by using one identity. Next we have 998 square. Now think of a number which ends at 0. For splitting this number, you can write 998 as 1000 minus 2 and then for this square we will be squaring this. ठीक है, 998 को हमने split कर दिया. सोचिए आप 998 को
998 से मल्टीप्लाई करें तब भी स्क्वायर ला सकते हैं, पर ये कितना डिफ़िकल्ट होगा। और अब यहाँ पर 1000 से डील करना आसान है बजाय कि 998 के। सो हियर वी विल बी स्प्लिटिंग दिस नंबर एंड नाउ वी विल बी अप्लाइंग द आइडेंटिटी। फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई बोथ दीज नंबर्स बाय 2 and so this is the expression. We write here, since a minus b whole square, it is equal to a square minus 2ab plus b square. Getting it? Now this will be double the number of zeros. 6 zeros हो जाएंगे 1000 square. स्क्वायर करने के लिए जितने जीरोज हैं उनको डबल कर देंगे काउंटिंग में. सो 6 zeros, so it will be 10 lakh. Minus here you will have 2 2s are 4 and 4000. And plus 2 square is 4. Getting it? Now 10 lakh minus 4000, it will be 996 and zeros. 9,96,000 and plus 4 here. So this will be 9,96,004. This is the answer. This is the square of 998. So quickly we have got the answer. और अगर आप ऐसे square कर रहे होते तो अभी तक आपका आंसर नहीं आया होता. I am sure about this. So this is a quick shortcut. Getting it? Next we have 5.2 square. To split this 5.2 we need the number 5. We can split it as 5 plus 0.2 or in a better way 5 plus 0.2. और अब इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है. अगेन द फर्स्ट आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड. फर्स्ट नंबर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम बाय 2 एंड देन सेकेंड नंबर स्क्वायर. ठीक है. अगेन मेंशन द आइडेंटिटी दैट यू आर यूजिंग. a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus the b square here. This is now 5 square is 25 plus here 2 5s are 10 into 0.2. 10 into 0.2. सोचिए कि आप पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ 2 ही लिखिए तो इट विल बी 20. और अब आप डेसिमल लगाइए तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे. इट विल बी 2.0 एंड 2.0 इज इक्वल टू 2. सो हियर वी विल राइट 2 एंड प्लस 0.2 इंटू 0.2. सोचिए कि पॉइंट नहीं है. 2 इंटू 2 इट विल बी 4. नाउ मार्क द डेसिमल. अब डेसिमल के बाद एक और एक 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा 1 2 और यहाँ पर डेसिमल और यहाँ पहले कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं. सो इट विल बी 0.04. गेटिंग इट? दिस इज द रफ पार्ट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई एम नाउ रिमूविंग इट. नाउ 25 plus 2 it's 27 plus here 0.04. This will be 27.04. How to add these two numbers? यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ डेसिमल नहीं है तो 27 के बाद डेसिमल लगकर 2 0 लगा दीजिए. 0.04. Now you can easily add. This will be 27.04. डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हुए इस तरह से ऐड करते हैं. जिस नंबर में डेसिमल नहीं है वहाँ उसके एंड में वंस प्लेस डिजिट के बाद डेसिमल लगाकर आप जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं, जितने डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं और इस तरह से आप एड अप कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव 297 into 303. Now here we have two different numbers. And of course we can multiply these numbers and get the answer, but we want to get the answer quickly and that too with the help of one identity. So think of a number which ends at 0 and is close to both these numbers. इन दोनों numbers के पास ऐसा कौन सा number है जो 0 पे end होता है? You will find it equal to 300. 297 can be written as 300 minus 3 and 303 can be written as 300 plus 3. Now look at this form. We have two binomial type expressions. यहाँ आप देखेंगे 300 और 3, 300 और 3. Numerically the terms are same, but the signs are opposite. Once we have minus and once we have plus. So this is resembling our third identity. Yes, since a minus b into a plus b, what it is? It's equal to a square minus b square. We can easily now write this expression as a square, that is 300 square, minus b square, that is 3 square. And now this will be 3 square is 9 and double the number of zeros. So it will be 90,000 and here we have 3 square which is 9. Now subtract these numbers. You will get here 100 minus 9. It's 91
and then it will be 899. So it's 89,991. देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया जस्ट बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. कितना सिंपल हो गया है. 297 को डील करना मुश्किल है. देखिए यहाँ पर 300 डील करना कितना ईजी रहा. Isn't it? Next we have this number. Again here we have two numbers and we have to multiply. We can always multiply them and get the answer. But to get the answer quickly, we will be applying one identity. For this we need to think of a number which ends at 0 and is close to both these numbers. Just think about it. ऐसा नंबर जो 0 पे एंड हो रहा है जिससे डील करना आसान होता है हमेशा और इन दोनों के पास भी हो. It's the number 80. You can write 78 as 80 minus 2 और 82 को आप लिख सकते हैं 80 plus 2. फिर से आप देखेंगे न्यूमेरिकली जो नंबर्स हैं वो सेम है, बस साइन ऑपोजिट है, एक बार माइनस और एक बार प्लस. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म a minus b into a plus b and this is always equal to a square minus b square. Using this identity we can write it as 80 square minus 2 square. 80 square, 8 square is 64 and 00 minus 2 square is 4. Now 100 minus 4 it's 96 and now 63. So it's 6396, 6396. This is the answer, the product of these two numbers. Easy. Next 8.9 square. Again we can get the answer by multiplying 8.9 by 8.9, but we want to get the answer quickly, so we will be applying one identity. For this we need to split this number 8.9 and we can split it as 9 minus 0.1. Now in case you have any difficulty in getting this relation, you can ignore this decimal sign first. सोचिए कि डेसिमल नहीं है 89, इसको तो आप लिख सकते हैं 90 minus 1 और अब आप डेसिमल लगा दीजिए एक एक डिजिट से पहले और यहाँ से 9.0 will be 9 and 0.1 is 0.1. तो इस तरह से आप ये कनेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हियर वी विल राइट 8.9 as 9 minus 0.1 and then for square we will be applying the whole square. I hope it's clear. Now think of the identity which will be used here. We have a minus b whole square. ये फॉर्म है तो यहाँ आप एक्सपैंड करेंगे a square minus 2ab plus b square. You can use this identity. Now here a square के लिए 9 square, then plus here 0.1 whole square and in between minus, multiply both of them by 2. Now 9 square it's 81 minus here 2 into 9 it's 18 into 0.1 and plus 0.1 whole square it will be 0.01 and again this will be 81 minus 1.8 plus 0.01. यहाँ आपको बताया है कैसे डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सोचिए कि आप डेसिमल है ही नहीं, बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करके देखिए और फिर बाद में आप डेसिमल लेकर आइए, काउंट कीजिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, उतने ही डिजिट्स के पहले आप डेसिमल लगाएंगे जो आंसर आ रहा है प्रोडक्ट उसमें. नाउ वी गेट दिस रिजल्ट. फर्स्ट वी विल एड अप दीज पॉजिटिव नंबर्स 81 एंड 0.01. इनको हम एक साथ ले लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और माइनस 1.8 को सेपरेट कर दिया. नाउ ऑन एडिंग वी विल गेट 81.01. कैसे ऐड करेंगे? 81.00 कर लीजिए और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड कीजिए तो ये 0 इसमें मर्ज हो जाएगा. इट विल बी 81.01 एंड नाउ माइनस 1.8. सब्ट्रैक्ट करने के लिए 81.01 माइनस हियर वी हैव 1.8. हियर वी कैन राइट 0 और अब सब्ट्रैक्ट कीजिए. इट विल बी 1. 10 minus 8 it will be 2. Cancel it 0. Cancel here 7 and it will be 10 minus 1 9. 79.21 and this is the answer. This is the square of 8.9. Getting it? Next one is this 10.5 into 9.5. Again we split these numbers. 10.5 को आप लिख सकते हैं 10 plus 0.5 और 9.5 को आप लिख सकते हैं 10 minus 0.5. और अब ये कौन सा फॉर्म हो गया? a plus b, a minus b. Here we can write since a plus b into a minus b it's equal to a square minus b square. We will be writing here a square that is 10 square minus 0.5 square. Now 10 square it's 100 minus here you will have 0.25. सब्ट्रैक्ट कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 100 के बाद आपको डेसिमल लगा के 0 लगाने हैं. 0.25 लिखिए यहाँ पर और सब्ट्रैक्ट कीजिए.
This will be 10 minus 5, 5, cancel it 9, 9 minus 2 is 7, cancel it 9 here, cancel it 9 here, it's 0, and here 99.75. This is the answer to this product. Getting it? Next one is using a square minus b square equal to a plus b into a minus b, find 51 square minus 49 square. आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, बस अब हमें ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और जल्दी से आंसर निकालना है. एक तरीका ये याद रखिएगा, आप 51 को 51 से मल्टीप्लाई कीजिए, 49 को 49 से, दोनों के स्क्वायर फाइंड आउट करके माइनस करके भी आंसर ला सकते हैं, पर ये डिफ़िकल्ट होगा. और यहीं पर अगर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करें तो देखिए कितनी जल्दी हमें आंसर मिलता है. दिस कैन बी रिटन एज 51 प्लस 49 and here 51 minus 49. Now 51 plus 49 is 100 and into 51 minus 49 is 2 and now the answer is 200. So quickly we have got the answer. और यही अगर आप मल्टीप्लाई करके इनको स्क्वायर करते और माइनस करते तो कितना टाइम लगता है सोचिए आप. नेक्स्ट वी हैव 1.02 square minus 0.98 square. Again this is of the form a square minus b square, a square minus b square, and this is equal to a plus b into a minus b. So applying this identity we can write it as 1.02 plus 0.98 into 1.02 minus 0.98 कर सकते हैं हम. Now this will be equal to, here add up the numbers, 10, 10, and here you will have 2.00, and here you will have subtract, you will get 1.02 minus 0.98, 12 minus 8 it's 4, cancel it, here you will have 9 minus 9 0, here again 0, 0.04. Now here you can easily multiply these numbers. 2.00 is nothing but 2, so we write here 2 into 0.04. This will be equal to 0.08, and this is the answer to this question. Easy. Next we have again of the form a square minus b square, and this will be equal to a plus b into a minus b. एक बार इन numbers को आप add up कर लीजिए 153 plus 147, और एक बार आप इनको subtract कर लीजिए 153 minus 147. Now on adding these numbers, 10 here and 300, on subtracting you will get 6, and this is equal to 1800. So quickly we got the answer. इसी की जगह अगर आप पहले 153 का स्क्वायर फाइंड आउट करते, फिर 147 स्क्वायर करते और फिर सब्ट्रैक्ट करते, आंसर तो यही आता, पर कितना टाइम लग जाता. इसीलिए ये आइडेंटिटीज़ हमेशा हेल्पफुल रहती हैं. नेक्स्ट वी हैव, this is another form of a square minus b square, which is represented by a plus b into a minus b. So we write here 12.1 plus 7.9 into 12.1 minus 7.9. इनको आप ऐड करके देख लीजिए, 12.1 7.9, 10 1 कैरेट 10 1 कैरेट 20.0, और सब्ट्रैक्ट करके भी देख लीजिए. Here we have 11, here we will have 1, 11 minus 9 it's 2, 11 minus 7 it's 4, 4.2. So here we get 20, 20.0 is 20 itself, so 20 into here we have 4.2. Multiply, you will get, suppose there is no decimal, you will get it as 840, and now mark the decimal. Decimal के बाद एक ही digit है, we mark the decimal here, and now 84.0 will be equal to 84 itself. This is equal to 84, and so the answer is 84. So quickly the answer we have got. Next one is this, using x plus a x plus b equal to x square plus a plus b into x plus ab, find 103 into 104. This time we will be using this identity. Let us break these numbers. 103 को हम लिख सकते हैं 100 plus 3, और 104 को लिख सकते हैं 100 plus 4. अब आप देखिए फर्स्ट टर्म्स तो सेम है, बट द सेकेंड टर्म्स आर डिफरेंट इन बोथ दीज बाइनोमियल्स. तो यहाँ अप्लाई होगी फोर्थ आइडेंटिटी, और इसके लिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 टर्म्स मिलेंगी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. फर्स्ट वाले में आप जो ये टर्म सेम है इसका स्क्वायर आएगा, सेकेंड टर्म में ये आएगा जो सेम नंबर है 100, और अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स का सम 3 plus 4, और यहाँ आएगा इनका प्रोडक्ट 3 into 4. Getting it? And now we can write 100 square, it will be
10,000, here 3 plus 4 is 7 into 100, 700 and plus here 12. So, this is equal to 10,712. So, quickly we have got the answer, the product here. Getting it? Next one is this one, 5.1 into 5.2. We can write 5.1 as 5 plus 0.1 और 5.2 को आप लिख सकते हैं 5 plus 0.2. यहाँ पर भी आप देखेंगे ये फर्स्ट टर्म सेम है, तो x की जगह तो आपका आ गया 5, a की जगह आपके पास है 0.1 और b की जगह है 0.2. इस केस में भी आप देखेंगे कि x की जगह आपके पास था 100, a की जगह आपके पास था 3 और b के प्लेस पर था 4. फ्रॉम हियर a b एंड दिस इज x. तो वही अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे. Here you can write it as 5 square plus here 0.1 plus 0.2 into 5 plus here 0.1 into 0.2. Since x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. Using this identity we are getting this. Now 5 square is 25. Here you will have 0.3 into 5. On adding these two numbers, plus here you will have 2 and 0, 0.02. This will be 25 plus here 1.5 plus here 0.02. तीनों numbers को add करेंगे, decimal लगा लीजिए आप 25 के बाद, then we have 1.5, then we have 0.02. यहाँ आप 0 लिख सकते हैं हमेशा. This will be 2, this will be 5, this will be 6 and here you have 2. So, 26.52. This is the answer. Okay. Next one is this 103 into 98. Again we will be splitting these numbers. This can be written as 100 plus 3, 103 and 98 can be splitted as 100 minus 2. यहाँ पर first term same है और ये second terms different हैं. So, this will be 100 square plus here 3 plus minus 2. ठीक है, into 100 प्लस हियर 3 इंटू -2. अब a की जगह आपके पास है 3 और b की जगह है आपके पास -2. यू कैन मेंशन इट हियर. x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2. एंड यूजिंग द फोर्थ आइडेंटिटी एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 10,000 with 4 zeros. 3 minus 2 is 1 and 1 into 100 is 100 itself and here we have -6. Now this will be 10100 minus 6. Now 100 minus 6, it's 94 and then we will have 10,094. This is the answer. You can subtract and get it. Getting it? Next one is 9.7 into 9.8. Now we can split again these numbers here. In two ways now you can split. 9.7 को आप लिख सकते हैं 9 plus 0.7 और 9.8 को आप लिख सकते हैं 9 plus 0.8. एक तरीके से तो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं. एक और वे है जिसमें आप इन दोनों नंबर्स को स्प्लिट कर सकते हैं एंड दिस टाइम यूजिंग द नंबर 10. यू कैन राइट 9.7 as 10 minus 0.3 and this one as 10 minus 0.2 and it's always easy to deal with 10, so I will be taking this splitting form. ठीक है, why we are taking this? Because it's always easy to deal with 10 in place of this 9. ठीक है. Now if you have any doubt how to get this expression, आप सोचिए कि डेसिमल है ही नहीं. 97 को आप लिख सकते हैं 100 minus 3 और 98 को आप लिख सकते हैं 100 minus 2. Now place the decimal just before single digit. और अब आप देखिए 9.7 क्या हो गया, 10.0 is 10 and 0.3 is 0.3. वही हमने लिखा है देखिए. और ये क्या हो गया, 10.0 is 10 and 0.2 is 0.2. वही हमने लिखा है. तो इस तरह से आप ये कनेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं in case you have any doubt. Now here you will see the first term in both these cases is same 10 and 10, but the second terms are different in both these cases and so we will be applying the fourth identity which says 10 square here, then plus here you will have minus 0.3 plus minus 0.2 into 10 plus here you will have minus 0.3 into minus 0.2 using the fourth identity given in the question itself. Now this will be 100 plus here you will have minus 0.5 into 10 and here you will have minus minus plus 2 3 is 6 and 0 0.06. This is 100
minus here you will have 0.5 into 10, it will be 5 itself, and here plus 0.06. Now 100 minus 5, it's 95, plus 0.06, it is equal to 95.06. So this is the product of these two given numbers. So with this we complete exercise 9.5. I hope you found that how algebraic identities simplify the calculation work and we get the answers very quickly. And I hope by this time you have got perfection in applying these identities. With this we complete this chapter. Soon we will meet again with a new chapter. Goodbye then.